Good afternoon once again. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Now we are going to take the part C again. Thanks to Isabella Ariam Anthony for this particular listening, as we are taking a whole lot of support from it. Normally we never do listenings because it is a different kind of a thing. So I had to take this support. Thanks to her for creating this good listening or this institute. So now we are jumping to the part C. A part C भी same thing है. It's just like a bigger part B. अब हम सुन के देखते हैं how can we execute Part this C. part. In this part of the test, you'll hear two different extracts. In each extract, you'll hear health professionals talking about aspects of their work. For questions 31 to 42, choose the answer A, B, or C, which fits best according to what you hear. Complete your answers as you listen. Now look at extract 1. So basically now you need to look extract 1. मतलब 1 to 6 क्वेश्चन पढ़ने का टाइम है आपके पास और टॉपिक बता दिया आपको एस्बेस्टोस के ऊपर है. अब आपके सामने ये पूरा पेज खुल गया. So let's. You hear a presentation on asbestos by a respiratory physician called Dr. Bill Musk. You now have 90 seconds to read questions 1 to 6. 90 seconds they are giving you to read. तो आप इनके साथ साथ में ना, अब आपके पास पेंसिल होगा पेपर में, है ना. तो पेंसिल से आपको क्या करना चाहिए, आपको क्वेश्चंस के छोटे छोटे फॉर्म लिख देने चाहिए. जैसे डॉक्टर मस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ एस्बेस्टोस वाइड स्प्रेड बिकॉज, तो आपको लिखना चाहिए अपनी पेंसिल से वाइड स्प्रेड यूज बिकॉज. अगर एक रफ शीट वहां पे मिलती है, ड्राफ्टेड शीट मिलती है उस पे, नहीं तो क्वेश्चन पेपर पे छोटा छोटा लिख दो वाइड स्प्रेड यूज बिकॉज, क्योंकि पार्ट बी और सी के लिए तो शायद आपको डार्क करने का अलग से ऑप्शन आता है. तो हमने क्वेश्चन को, मैंने पूरे क्वेश्चन को ये कर दिया वाइड स्प्रेड यूज बिकॉज. क्यों यूज हुआ. सेकंड क्वेश्चन 90 सेकंड्स है, मतलब 3 मिनट है, ओ सॉरी 1.5 मिनट है आपके पास. डिस्पाइट एस्बेस्टोस बीइंग बैंड इन 2003, तो मैंने कीवर्ड लिख दिया कि जब मेरे को 2003 बैन करेगा तब तो जरूर सुनना है. डॉक्टर पीपल स्टिल प्रेजेंट विद एस्बेस्टोस रिलेटेड डिजीज बिकॉज, स्टिल हैव डिजीज बिकॉज. सेकंड क्वेश्चन मेरा तैयार हो गया. अब मुझे क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा ना बार बार. स्टिल लोगों को ये डिजीज होती है क्यों, एस्बेस्टोस रिलेटेड डिजीज. क्वेश्चन नंबर 3. You have to plan it. Dr. Musk mentions the research conducted on asbestos to highlight that. Research mentions the research conducted to highlight that. किस चीज को highlight? To highlight what? तो ये मेरे 3 क्वेश्चंस. तो मैं आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ. Let's see how do they go. 3 क्वेश्चंस करके देखते हैं कैसे चलते हैं. And let's give it a shot. So I'm just playing it now. तो मैं इसको आगे कर रहा हूँ. Often strike fear into people. Okay. Hello, my name is Bill Musk. I'm a respiratory physician at the Princess Alexandra Hospital, and I'm going to talk to you today about a substance and some diseases that, when mentioned, often strike fear into people. The substance is asbestos. So basically he's saying substance is asbestos. That is what we are going to talk about. It brings fear to so many people. Diseases like this. तो हम आज उन diseases की बात कर रहे हैं जिसमें से हम आज बात कर रहे हैं asbestos की. I'll get to the diseases it causes later. Asbestos is a naturally occurring mineral rock that was mined in Australia from the 1940s to the late 1980s. तो ऑस्ट्रेलिया में 1940s से 1980s तक, यानी ऑलमोस्ट 1990 के लेट तक, 1990 तक चला था, 1980s के लेट तक. तो मतलब लगभग 40-50 साल यूज में रहा. Used in a variety of materials and products because it was considered resistant to fire, moisture, chemicals, and heat. It was also widely used as an insulation material. One of
The other main features that made asbestos a desired resource for many companies, not only in Australia but in many other parts. Okay, so I just want to ask you, so widely used कैसे यूज किया जाता था? एज एन इंसुलेशन मटेरियल. इंसुलेशन मटेरियल क्यों यूज होता था? क्योंकि ये फायर वगैरह सबको रेजिस्ट करता था और वाइडली यूज किया जाता था एज एन इंसुलेशन मटेरियल. एक बार दोबारा सुनते हैं. Mineral rock that was mined in Australia from the 1940s to the late 1980s and used in a variety of materials and products because it was considered resistant to fire, moisture, chemicals, and heat. It was also widely used as an insulation material. One of the other main features that made asbestos a desired resource for many companies, not only in Australia but in many other parts of the world, was that it was also relatively cheap to mine and process. Unfortunately, however, asbestos turned out to be a highly toxic, insidious and environmentally persistent material that has killed thousands of Australians and will kill thousands more in this century. In fact, Australia and the UK have the highest rates of asbestos-related death in the world. सो बेसिकली ये जो ज्यादा बात कर रहा है, इसका आंसर क्या दिया हुआ है? कल हमारा आंसर इस चीज का गलत हुआ था जब हमने क्लास में किया था. एक बार मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ. इसका आंसर क्या दिया हुआ है, प्लीज बताना मेरे को. व्हाट्स द आंसर गिवन ऑफ दिस क्वेश्चन? आंसर बी. हाँ, लेकिन आंसर बी ना आज मेरे को थोड़ा सा बी भी लगा, क्योंकि उसने बोला बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टू दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड इट वाज वाइडली यूज्ड एज इट वाज. क्या बोला था? एज इट वाज. उन्होंने कॉस्ट पे भी बात की थी. इट वाज कंपैरेटिवली वेरी चीप बोला था. क्लास में वैसे इसका आंसर चेंज करवा के ए ही किया है. या आई आल्सो मार्क्ड इट. And that we have done in the class, but still I believe it can be otherwise round 2. So let us check it again if what's the answer. So let us go through this particular thing again and let's listen to it एक बार फिर से. Okay, so let me check this thing again. So please अपने उसको silent पे रखना please. I'm just coming. Because asbestos was used so widely in the building industry, people can be exposed to it in their workplace, their communities, or in their... Because it was considered resistant to fire, moisture, chemicals, and heat. It was also widely used as an insulation material. One of the other main features that made asbestos a desired resource for many companies, not only in Australia but in many other parts of the world, was that it was also relatively cheap to mine and process. Unfortunately, however, asbestos turned out to be a highly toxic, insidious and environmentally persistent material that has killed thousands of Australians and will kill thousands more in this century. Still believe A should be the right answer only. And what do you all say about it? Yes, sir. A. Sir, A. We will change this answer for now. Let's go to some questions are challenging, so maybe we are not understanding the challenge. It can be both ways. So let's go to question number 2 and 3. So question number 2, what was that? When banned in 2003, why still people come with this disease? So let's focus on this. Because asbestos was a highly toxic, insidious and environmentally persistent material that has killed thousands of Australians and will kill thousands more in this century. In fact, Australia and the UK have the highest rates of asbestos-related death in the world. Now, because asbestos whatever was he's used so speaking, widely in the building industry, people whatever can be... he's speaking, he's giving time to think about this question and to read this question. So that is how you should utilize your time. Over here, it is very important कि आपको जो इसमें से लग रहा है, अब देखो वापस जाके आप रिकॉर्डिंग सुन नहीं सकते, तो प्लीज अब इस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करो. अब जो भी वो बोल रहा है वो इसलिए बोल रहा है ताकि आप ये सब पढ़ पाओ. तो प्लीज अब इसके बारे में मत सोचते रहो. अब इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं. अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को आंसर करना भी होगा तो जब आप यहाँ पहुंचोगे ना और इसको दोबारा पढ़ोगे तब भी बता देगा कि इनमें से क्या करना चाहिए, क्योंकि अब वो जो उसने उस टाइम बोला था वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुका है. अब आपको सोचने का फायदा नहीं. अब ये क्वेश्चन गया, बस यहाँ पे हम वो गलती करते हैं. अब हम अगर ये सोच रहे हैं तो मतलब हम ये नहीं पढ़ रहे. तो प्लीज जब आपको पता लग जाए पक्का ये वाला क्वेश्चन निकल गया, जब तक अगर वो वाइड स्प्रेड वर्ड दोबारा बोल लेगा तो सुनना है, नहीं तो अब प्लीज अपना ध्यान नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डालो.
exposed to it in their workplace, their communities, or in their homes. If products containing asbestos are disturbed, tiny asbestos fibres, so thin they can be invisible to the unaided eye, are released into the air. When asbestos fibres are breathed in, they can get trapped in a person's lungs and remain there for a long time. Over time, these fibres can accumulate and cause scarring and inflammation. As a result, breathing can be affected, which leads to serious health problems, including a number of respiratory diseases such as lung cancer, asbestosis, pleural plaques, benign pleural effusion, and malignant mesothelioma. Although exposure is now strictly regulated, the national ban on asbestos came into effect in Australia on 31st of December 2003. अब देखो यहाँ पे एंजाइटी होती है कि हमें लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है कि क्वेश्चन निकल गया, पर अभी तक बैंड वर्ड नहीं आया था, तो अब जाके वो बात आई है, मतलब अब तक वो आपको ये क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दे रहा था लगातार. Patients continue to present with these diseases because of the long interval between exposure to asbestos and the clinical appearance of disease. बिटवीन एक्सपोजर एंड क्लिनिकल अपीयरेंस, यानी एक्सपोजर पहले हो जाता है और सिम्टम्स बहुत देर में आते हैं, यानी इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर सिम्टम्स टू अपीयर. अब अगला क्वेश्चन, अब आपके पास टाइम है दोबारा, अब देखना कितना टाइम है आपके पास. Research has shown that an individual's specific risk factors. अब जैसे ही मेरा अगला वर्ड रिसर्च है तो मैं समझ गया भाई ये वाला सब वेस्ट है, अब मेरे को फटाफट रिसर्च वाला करना है, तो रिसर्च वाला पार्ट मेरा मिस नहीं होना चाहिए, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है. Continue to present with these diseases because of the long interval between exposure to asbestos and the clinical appearance of disease. Research has shown that an individual's specific risk factors, such as whether or not they are a smoker or if they present with a pre-existing lung condition, can determine how asbestos exposure affects them. Other factors include. सो बेसिकली रिसर्च ये कह रही है कि आपकी कौन सी डिजीजेज हैं वो डिसाइड करती हैं कि एस्बेस्टोस कैसे काम करेगा. मतलब दोबारा देखते हैं, Patients continue to present with these diseases because of the long interval between exposure to asbestos and the clinical appearance of disease. Research has shown that an individual's specific risk factors, such as whether or not they are a smoker or if they present with a pre-existing lung condition, can determine how asbestos exposure affects them. Other factors include how much asbestos they were exposed to, how long they were exposed for, the size, shape, and chemical makeup of the asbestos fibres, as well as the source of the exposure. Presenting signs and symptoms tend to be non-specific, so occupational history helps guide clinical. तो बेसिकली अगेन इसका भी शायद आंसर में कुछ गड़बड़ था, तो बेसिकली वो कह रहा था हर बंदे के लिए जो रिएक्शन होता है वो अलग अलग होता है, तो इसका आंसर क्या था वैसे, कैन यू हेल्प मी विद दैट, बी और ए? देयर वाज समथिंग selective about this answer as well. Can you help me? So option B. Option B? Yes sir. तो ठीक है, हाँ मतलब उसने ये कहा कि डिपेंड करता है कि कौन बंदा स्मोकर है कौन बंदा नहीं है, और हर बंदा रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री ऑफ ऑल पेशेंट. सर ऑक्यूपेशनल वाला ना यहाँ पे चला गया, और कैरेक्टराइज बाय ये वाला आंसर देखो, ये वाला आंसर यहीं पे आ जाएगा. रिसर्च कहती है बी है सर, बी आंसर ही है. ऑक्यूपेशनल ये सब पेशेंट्स के अलग अलग होते हैं ना, कोई स्मोकर है कोई नहीं है. So every person is showing different reactions. Medical conditions. Yes. मतलब अगेन देखो आप अलग अलग वर्ड्स बोलते हो ना, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं भी. आप प्लीज अपने मन को भी कंफ्यूज मत करो, बस ये कहा है कि ये डिपेंड करता है स्मोकर है या नहीं है, उसके हिसाब से ये आपको अफेक्ट करता है, यानी हर बंदे की रिएक्शन अलग होती है जो इसके कॉन्टेक्ट में आता है, हर बंदे की रिएक्शन अलग होती है. तो एक बार दोबारा सुन लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, ताकि देन यू कैन प्रैक्टिस इट इजीली. Benign pleural effusion and malignant mesothelioma. Although exposure is now strictly regulated, the national ban on asbestos came into effect in Australia on 31st of December 2003. Patients continue to present with these diseases because of the long interval between exposure to asbestos and the clinical appearance of disease. Research has shown that an individual's specific risk factors, such as whether or not they are a smoker or if they present with a pre-existing lung condition, can determine how asbestos exposure affects them.
So how exposure affects them depends upon their exposure and their diseases, कि वो क्या क्या करते हैं, यानी हर बंदे पे रिएक्शन डिफरेंट होने वाला है कि उनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है. सो अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट दैट इजी. अगर हम फर्स्ट आंसर को अगर बी मान लें, मतलब उसे चेंज कर दें, तो बिल्कुल ठीक लिसनिंग है. So again, it's just about your dedication and devotion towards your work. That's pretty much it from my side. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and thanks once again to Isabella Ariam Anthony Feather Institute or ma'am for this wonderful listening. Thank you.